aspirants, welcome back to our channel MPSC Easy Learning, and this is Advocate Sabira Mistry. As you all know, I've started this previous year question series of the combined pre. I have already covered 2011 PSI, STI and ASO. In today's lecture, we'll be discussing PSI Pre of 2011. And this series is for the ones who have just started with the preparation and want to give the 2024 combined pre, as well as for the ones who have given the attempts. एक दो attempt दिए हैं, but you have never seriously analyzed the previous year questions. Please, I am emphasizing on analyze and not reading. अगर आपने read किया है, reading is not sufficient. You have to analyze the paper. So this series is for both the brackets of students, and this is something which I wanted to discuss as well, that if you want this series to benefit you, please start from PSI Pre 2011, then watch STI and then watch ASO. एक लेक्चर एक बार देखिए, सीरीज के जैसे मत चलाइएगा इसे. ओके, दिस इज नॉट सम नेटफ्लिक्स सीरीज. एक देखिए, लर्न कीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट वन, learn that and then move to the third one. And as you all know, before the lecture I add certain questions of the previous lecture, because if we see in the exam only studying is not sufficient. उससे 10 गुना important ये है कि आप question बना पाओ. That is more important. And one reality of these exams are, or the students who don't qualify a paper, it is not because कि उनकी पढ़ाई कम है, नहीं, it is because question नहीं बना पाए. That is the reason. Do solve the questions as well which I give, which are from the previous lecture. इससे आपका confidence भी बढ़ेगा. So with this, let's start with it. Like I was telling, these are the set of questions of ASO Pre 2011. इसको पढ़िए and please let me know the answers in the comment section. Also, our books of History of Maharashtra, Current Affair Yearly and Geography of Maharashtra is also available for MPSC English medium aspirants. And if you want the sample PDF of these books, you can either text us on WhatsApp or you can join our Telegram channel. And on our Telegram channel, I have also uploaded the proofs of the questions which have been tackled from history and from our current affair as well, right from Rajya Seva to Talati Bharti and even Police Constable. You see, any range of exams, you will definitely find questions from our current affair yearbook, and I have uploaded it with proofs. हवा की बातें नहीं कर रही हूँ. Okay, the Geography of Maharashtra is also available. If you want to purchase this, you can definitely get in touch with us. Let's proceed to the first question. Infection by the dash causes AIDS. Human immunodeficiency virus, human immunodangerous virus, human initiative deficiency virus, or none of the above. Your right answer is human immunodeficiency virus. Let's see certain important points from this question. Firstly, what is the full form of AIDS? It is acquired immunodeficiency syndrome. और ये जो, for example, अगर आपको फीवर है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, राइट, कि मलेरिया है, डेंगू है, क्या है. लाइकवाइज एक टेस्ट होता है एड्स के लिए, उसका नाम है एलिसा टेस्ट. ये भी पूछा गया एक बार पेपर में, प्लीज नोट दिस. द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay. And what is the full form of HIV? It is human immunodeficiency. One more point which you must keep in your mind, that what kind of a disease is it? Is it bacterial or is it viral or is it a protozoal disease? So it is a viral disease. Usually students यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, आपकी पढ़ाई हो गई, but no, you need to know some important facts from current affair perspective as well. When is World AIDS Day observed? So World AIDS Day is observed on 1st December. Please note, ये भी पूछा गया है. And what is the theme of World AIDS Day? It is equalize. ये भी आप ध्यान रखिए, ये 2022 का है, ओके, बिकॉज अभी दिसंबर तो आने वाला है, राइट. सो दिस इज ऑफ 2022. 2023 में थीम अपडेट हो जाएगा. Question analysis done, option analysis done. And if we see from which chapter is this question, this is from the chapter disease. I have been telling you consistently, this should be done in first priority. Do not
ever think of skipping this chapter and going for the paper. Okay. Next question. How much of atmosphere is formed of nitrogen? 1/3, 1/2, 3/4, 4/5. Your right answer is 4/5. In next paper they can give you in percentage, right? So if we see nitrogen का कितना percent होता है, it is 78% in the air. Oxygen is 21%. Argon is 0.9%. Carbon dioxide is 0.03% and other gases are 0.07. Please keep this in your mind. ये आता है आपके chemistry के part में. Next question. Which of the following is not expected in organic farming? Use of animal excreta, use of botanical insecticides, use of chemical fertilizers and insecticides, none of the above. Organic है मतलब natural चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, right? फार्मिंग में क्लियरली आपका आंसर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स है. केमिकल यूज़ नहीं होना चाहिए. सी दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कांट बी फाउंड इन एनी बुक. ये आपका बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? CO2, CH4, hydrogen sulfide. Here your answer is NO2 and SO2. Firstly, let us understand some concept over here. NO2 जो आपका ये आता है due to burning of fossil fuels at high temperature. For example, डीजल कार्स में डीजल जलता है ना, उससे रिलीज होता है NO2. SO2 is usually released by factories and refineries. So when this SO2 and NO2 gets mixed with the atmosphere, these forms acid, namely nitric acid and sulfuric acid. And then they cause acid rain. Usually if you see what is the pH of rain, it is considered to be neutral, right? और जब acid rain होता है इसका pH होता है approximate 4.2. 0 to 6.9 जो होता है वो होता है आपका acidic. One more thing, if you want to know about the detrimental effects of acid rain, one prototypical example is the symbol of love जो शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए बनाया था, that is Taj Mahal. It has been in news as well that Taj Mahal yellow होते जा रहा है. It is corroding. What is the reason behind this? It is acid rain. इस पे one legally also I would like to discuss, एक case भी हुआ है इस पे. It is commonly known as the Taj Trapezium case. It is a landmark judgment. आप ज़रूर if you're interested in this, please go and watch it. It is MC Mehta versus Union of India. इसमें ये पाया गया था कि ताजमहल जो है वो येलो होते जा रहा है. And one major reason due to which Taj Mahal was becoming yellow was the acid rain. और ये बन रहा कहाँ से था? SO2. From where was it forming? It was forming due to the Mathura refineries. And Supreme Court perused through and then they came to a conclusion that ये जो refineries है इसको relocate कीजिए, otherwise use natural gas or you shut it down. So this is the effect of acid rain on the environment. I hope you've understood the concept. Night blindness. B. Beriberi. C. Hemorrhage. K. Scurvy. Here I won't read it full, I'll just tell you the right answer. Okay, so your right answer is option 3. If you have deficiency of vitamin A, it causes night blindness. If you have deficiency of vitamin B, it causes beriberi. And if there's deficiency of vitamin C, it causes scurvy. And if there's deficiency of vitamin K, it causes hemorrhage. Like here I've mentioned, if you watched my reel, you already know this. Vitamin A is also known as retinol, and it causes night blindness or xerophthalmia. Vitamin C is known as ascorbic acid, which causes scurvy. Vitamin K, what is scurvy? It is the bleeding of the gums. School में पढ़ा था, right? And vitamin B and vitamin B1 specifically, this is thiamine बोला जाता है. Beriberi
बेरी विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से होता है. सो इससे ये पता चलता है diseases again and the vitamin deficiency. You have to focus on this topic. Next question. The inner surface of the solar cooker is painted black because the black surface emits the incident heat radiation, reflects the incident heat radiation, refuses the incident heat radiation, or absorbs the incident heat radiation. Your right answer is it absorbs the incident heat radiation. That is what happens in your solar cooker box. Next question. Dash is used in the preparation of cakes and bread to make them light and spongy. Sodium carbonate, calcium carbonate, sodium bicarbonate, or bleaching powder. Your right answer is sodium bicarbonate. If we see certain important points about these options as well. Sodium carbonate अगर देखा जाए, it is used for washing clothes and to refine petroleum. Please keep this in your mind, okay? This is something new. ये पूछा जा सकता है पेपर में. Like what is used? Like dash is used to refine petroleum. So it is sodium carbonate. Sodium bicarbonate is used for baking. I used to always get confused between carbonate कहाँ use होता है and bicarbonate कहाँ use होता है. So one thing which this is my trick which I followed is B से baking, इसीलिए B से bicarbonate. Sodium bicarbonate will be used for baking. BB common. Next, bleaching powder. Bleaching powder is also known as chloride of lime, and it is used for disinfection and in the paper and textile industry. Next question. An atom of element is electrically dash. Negatively charged, positively charged, neutral, conductor. आपका सही जवाब है neutral. An atom of element is electrically neutral. If we see some important points about this question, an atom is electrically neutral. If we see proton is positively charged. Neutron has no charge and electron is negatively charged. Atomic number, इस पे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं. Atomic number which is denoted by this sign. So how do you determine the atomic number? The total number of protons और electrons present. उससे आपको मिलता है आपका atomic number. Atomic mass number is denoted by A, which is the sum of proton and neutron in the nucleus. This is from the topic atom from physics. Please note, very important, must study. Next question. Cell wall of fungi is made up of tough and complex sugars called cellulose, sucrose, glucose, or chitin. Your right answer is chitin. So the cell wall of fungi is made up of chitin and polysaccharide. And if they ask you, fungi and algae, they belong to which plant kingdom? They belong to Thallophyta. And what is the study of fungi known as? The study of fungi is known as mycology. These are certain examples. ये आपके मैच द फॉलोइंग में में भी बन सकता है, because recently in the paper they had I vividly remember they had asked you about the blind snake and all that which came from your animal kingdom. It means you have to know their original names and also what they are known as. This is very important. So Aspergillus is also known as blue fungi, Penicillium is known as green fungi, and Neurospira is known as pink fungi. If we see, this comes from your topic plant kingdom. Please study it in first priority. Very important topic from biology part. And on the Telegram channel, I've uploaded a list of topics which are important from biology part. Please उसे डाउनलोड कीजिए और उसके हिसाब से बायोलॉजी पढ़िए, बिकॉज आई हैव नोटिस कि साइंस बायोलॉजी बहुत टफ जाता है. दैट इज़ द रीज़न आफ्टर एनालाइजिंग आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स which a student must study from biology perspective. Next question, which disease is contacted by ingestion of contaminated food or water? Typhoid, rabies, tuberculosis or polio? Your right answer is typhoid. है ना, गंदा खाना गंदा पानी ये पी के आपको टाइफाइड होता है. If we see
this in depth. Typhoid is caused by Salmonella typhi. Okay, it is a bacterial disease. What is the reason? Due to unhygienic food and water. Test कौन सा किया जाता है for diagnosis of typhoid? It is WIDL. And which vaccine? It is Tab and Tizla. ये दो वैक्सीन दिया जाता है. Next, typhoid कर लिया. Now we'll see tuberculosis. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculin. And इसका treatment एक्सरे कराते हैं, नहीं तो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट कराते हैं जिससे पता चलता है टीबी है या नहीं. एंड विच वैक्सीन इज गिवन? इट इज बैसिलस कैलमेटी ग्वेरिन, which is also known as BCG. Please note, I have purposely written the full form over here because this has been asked in one of the papers. So you have to learn this. And who found the bacteria of TB? It is Robert Koch. Tuberculosis का हमने analysis किया. Now if you see rabies जैसे भी आप बोलो, it is caused by rhabdovirus and it affects your central nervous system. इससे आपको हाइड्रोफोबिया होता है, you know, fear of water. Next is polio. Polio is caused by enterovirus which affects your central nervous system again. And vaccine कौन सा दिया जाता है? Salk and Sabine. Please note, check combined 2021. Question has been repeated. Salk इसे इंजेक्ट किया जाता है और Sabine को orally दिया जाता है. This is from the topic disease. Have to study it in the first priority. And if you're wondering, you know, that why for some questions I have made such huge notes but for some other questions I don't have, it is because जो first priority में होते हैं, that is when I cover it in depth. Other questions are important, but these questions, they have high chances of getting repeated, and I don't want you all to lose a single mark. Okay. Which of the following is a flying mammal? Parrot, bat, owl, kite. All of us know the answer. It is bat. Option analysis not necessary. Next question. So इससे आपका science खत्म हो जाता है, and now we'll be starting with history. The revolt of 1857 prominently revealed dash unity. Hindu Muslim, English Muslim, Maratha Sikh, English Maratha. Your right answer is Hindu Muslim. The revolt of 1857 prominently revealed Hindu Muslim unity. And if they ask you कहाँ begin कहाँ हुआ था ये revolt? It began at Meerut. इस पे question हमेशा बनते हैं. From Delhi, General Bakht Khan was leading. From Kanpur, it was Nana Sahib. From Lucknow, Begum Hasrat Mahal. Please note, this has already been asked. From Bareilly, you've got Khan Bahadur, and from Faizabad, you've got Maulvi Ahmadullah. If we see the causes, what caused the revolt of 1857? The doctrine of lapse. Firstly, in the comment section, do let me know that which is the Governor General for involved with the doctrine of lapse. Okay. Corruption बहुत ज़्यादा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, हम सबको पता है. एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द इमीडिएट इफेक्ट. जहाँ वो कार्ट्रिज पे देयर वाज रैपिंग पेपर उनके राइफल पे विच वाज ग्रीस्ड विथ काउ और पिग फैट. दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स और इससे आपका इमीडिएट कॉज होता है फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. इमीडिएट कॉज मतलब जो कॉज रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया, दैट इज योर इमीडिएट कॉज. एंड द क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1 November 1858 gave the title of Viceroy, and it was said that in the act that the era of annexation has come to an end. This is from the topic modern history from 1857, and if you're watching it for the first time, please note for modern history 1857 to 1947 ही पढ़ना है. इसके पीछे नॉट नेसेसरी, इसके आगे नॉट नेसेसरी. फोकस इस पे ही होता है. एंड ऑल्सो वन क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू एड्रेस जो हमेशा पूछा जाता है, एंशिएंट मेडिवल. डू वी हैव टू स्टडी दिस फॉर कंबाइंड प्री और फॉर कंबाइंड मेंस? नो,
ancient, medieval you don't have to study for combined pre or combined mains. You only have to focus on modern and Maharashtra history. Next question, the immediate cause of the revolt of 1857. I will not read everything because we've just discussed this. So it is the use of cartridges greased with cow fat and pig fat. Again, a question on modern history from 1857. Next question, after the revolt of 1857, on which date all the powers of the Indian state were transferred to the Queen of England? 1st December 1859, 1st November 1857, 1st December 1858 or 1st November 1858? It is 1st November 1858 is the date on which all the powers of the Indian state were transferred to the Queen of England. Next question, separate electorates for the untouchables were granted by dash? Montagu-Chelmsford Act, Wavell Plan, Ramsay-MacDonald Award or Indian Act 1935? Your right answer is Ramsay-MacDonald Award for the untouchables. And if they ask you for Muslims का है आपका 1909 मिंटो मॉर्ले. बहुत कंफ्यूजिंग है. हाँ, ये मुस्लिम को दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, और जो रैमसे मैकडोनल्ड है दैट इज फॉर अनटचेबल्स. ये ध्यान में रखिएगा. हियर आई मेंशन दैट, आप पढ़ लेना, एंड इफ यू वांट द पीडीएफ तो वो भी ले लेना था सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू रिवाइज. And who was Ramsay MacDonald? They can also ask you this. He was the British Prime Minister. Sorry, I missed out on a point. The Ramsay MacDonald Award is also known as AKA, also known as Communal Award. और डेट क्या था, कब आया था ये अवार्ड, ये भी पूछा जाता है. It was announced on the 16th August 1932 after the third Roundtable Conference. And this award is based on, अगर if I am announcing something, you know that this has to be done, कुछ तो मेरा प्रायर रिसर्च हुआ रहेगा, कोई कमिटी ने रिसर्च किया रहेगा, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया ना ये अनाउंस करने का. सो हियर लाइकवाइज इफ यू से रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड, इट इज बेस्ड ऑन द लोथियन कमिटी. Next question, the first conference of INC, that is Indian National Congress, was shifted from Pune to Mumbai? Question mark. Reason पूछा है यहाँ पे, and I have already discussed this with you. Due to the opposition of the people of Pune? नहीं. Due to the demand of the people of Mumbai? नहीं. आपका सही जवाब है option 3. Due to the outbreak of viral disease in Pune. If we see, quick revision करते हैं हम INC का. First session कब हुआ? 20 December 1885. Location पुणे था लेकिन मुंबई होगा. मुंबई में exactly कहाँ पे? It is the Gokuldas Tejpal College due to plague. और ये मैंने ट्रिक बनाया था, मैंने इसका रील भी अपलोड किया है. टू रिमेंबर द फर्स्ट 5 प्रेसिडेंट्स ऑफ INC, द ट्रिक इज व्हाट डू ब्लैक गोट्स वांट. ओके, और व्हाट W से आपका आता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, D से है दादा भाई नवरोजी, B से है बदेरुद्दीन तैयब जी, G से है जॉर्ज यूल और W से है विलियम वेडरबर्न. एंड ये भी एक बार पूछा गया 1906 में कौन था प्रेसिडेंट, इट वाज दादा भाई नवरोजी. और ये हुआ कहाँ पे था सेशन, ये हुआ था आपका कैलकाटा में, वेयर स्वराज वाज डिक्लेयर्ड. दिस अगेन अ क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम INC. प्लीज नोट INC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Rand, the plague commissioner of Pune, was assassinated in the year 1893 by dash. नाम पूछा है दामोदर हरी चाफेकर, वासुदेव बलवंत फड़के, उस्ताद लहूजी मांग, अनंत कान्हेरे. आपका सही जवाब है दामोदर हरी चाफेकर. This took place in the year 1893. Please keep the year in the mind and please keep the person. See, ये पीरियड में बहुत सारे assassinations हुए. You need to know who was assassinated and who assassinated. किसने किसको मारा, आपको दोनों याद रखना है, कौन मरा और कौन किसने इनको मारा. बोथ द साइड यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. MPSC इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछती है. इवन इन द प्रीवियस ईयर 2011 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस. ओके, हियर
हमने ऑलरेडी कवर किया. एंड दिस वॉज आस्क्ड इन द 2011 विच आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट. मदन लाल धिंगरा वॉज हैंग्ड in 1909 for assassinating cousin Wiley. So here how will I study? Wiley 1909 मदन लाल. सिंपल ऐसा मैं लर्न करूँगी. ओके. अगेन अ क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑन असैसिनेशंस. सब असैसिनेशंस याद होना ज़रूरी है. कॉन्स्पिरेसी केस याद होना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? ढाका, कोलकाता, चिटागोंग, मुर्शिदाबाद. आपका सही जवाब है ढाका. एंड इन विच ईयर? in 1906. And it was founded by whom? It was founded by Khwaja Salimullah and Aga Khan and A.K. Fazul Haq. See, here I have mentioned 3 names because कभी कभी क्वेश्चन में इनका नाम दिया जाता है, कभी इनका नाम दिया जाता है और कभी इनका. So whoever you find in the question, टिक करके आ जाइएगा. Next question, which Governor General was responsible for partition of Bengal? Lord Ripon, Lord Dalhousie, Lord Dufferin, Lord Curzon. आपका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन. ओके. और ये पार्टीशन हुआ कब था? 16 अक्टूबर 1905. सॉरी, यहाँ 1 डालना भूल गई मैं. एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग डे. दिस हैज़ बीन आस्क्ड रिसेंटली इन ग्रुप सी. ये पूछा गया था मॉर्निंग डे और डेट. सो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड. नेवर नो, अगली बार पूछा जाए. अ क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो इसे डेप्थ में पढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लेड द बरदौली सत्याग्रह. ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन. सरदार पटेल, विनोबा भावे, M.K. गांधी, महादेव देसाई. योर राइट आंसर इज सरदार पटेल लेड द बरदौली सत्याग्रह. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नवरोजी. Your right answer is Dada Bhai Navroji. See, here I am not doing the option analysis because these questions are extremely simple. Okay? And ये मैंने already discuss किया है पिछले 3 lectures में. So वापस repetition होगा. That is the reason मैंने कोई depth में cover नहीं किया इन्हें. Alright? Next question. From among the following, who was the earliest revolutionary in Maharashtra? Raja Ram Mohan Roy, वी.डी. सावरकर, दादा भाई नवरोजी, वासुदेव बलवंत फड़के. आपका सही जवाब है वासुदेव बलवंत फड़के. प्लीज़ नोट, पहली बार इनका नाम आया है पेपर में. 3 पेपर ऑलरेडी सॉल्व किए, ये चौथा है. सो फर्स्ट टाइम दिस पर्सन's नेम हैज कम. ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र हिस्ट्री. प्लीज स्टडी हिम इन डेप्थ. Here I have just typed the answer. So this question is from Maharashtra history on a reformer, on a revolutionary of Vasudev Balwant Phadke. And if you're wondering from where to study Maharashtra history, you can either purchase a book, वो नहीं है, 11th standard old textbook. All social reformers are given. Even Vasudev Balwant Phadke has been mentioned. Please इसको डेप्थ में करिए. It will definitely help you. All right. Next question. Dash was the founder of Home Rule Movement in Maharashtra. ये इतनी बार रिपीट हो चुका है. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, महात्मा फुले और लोकमान्य टिळक. आपका सही जवाब है लोकमान्य टिळक was the founder of Home Rule Movement in Maharashtra. एंड इफ दे आस्क यू होम रूल मूवमेंट, ये इंस्पिरेशन कौन से कंट्री से है? सो ये है आयरलैंड. ओके. एंड इफ दे आस्क कि इंडिया में हु सेट अप द होम रूल लीग, इट इज एनी बेसेंट. कहाँ पे ये पूछा गया? तो इट इज मद्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट, ये पर्सनली मेरा, इतने हमने 3 पेपर सॉल्व किए, ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है. जस्ट लुक एट इट. द डिक्लेरेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 वॉज डन बाय डैश. लॉर्ड कर्जन, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, जॉर्ज 5, ब्रिटिश पार्लियामेंट. ये 2 निकल ही जाते हैं. स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इनका नाम स्पेसिफिकली दिया है
सी, पार्टीशन इन्होंने कराया, कर्जन ने कराया, लेकिन कैंसल कर्जन ने नहीं किया. इट वॉज जॉर्ज 5 हु कैंसल्ड इट. ओके, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. हाथ डाल दीजिए बिकॉज इसका चांसेस होना रिपीट है. ओके, कीप दिस इन योर माइंड. सो पार्टीशन ऑफ बंगाल, मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया है राइट, जिसमें पूछा गया था पार्टीशन कौन कराया, कर्जन ने कराया, और इसको कैंसिल किसने किया, और कैंसिल किसने किया, इट इज जॉर्ज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, चित्तरंजन दास, जस्टिस रानाडे. योर राइट आंसर इज चित्तरंजन दास. सी, पार्टी फॉर्म हुई है, लाइक आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू नो व्हेन वाज इट फॉर्म्ड. 9 जन 1923. फाउंडर मेंबर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. The reason I added this because this question was repeated. So founder members are पंडित जवाहरलाल नेहरू and चित्तरंजन दास. ये आपको ध्यान में रखिए. Next question, since when was the Governor General of India known as the Viceroy of India? It is 1858 AD. Option analysis not required. As we all know, Act कब आया था? 1 November 1858. Next question, under the leadership of Chandrasekhar Azad, which organization was established by Sardar Bhagat Singh during 1928? नवजीवन सैनिक संघ नहीं, गदर नहीं. गदर पार्टी का फॉर्मेशन कौन से साल में हुआ? डू लेट मी नो. आई हैव कवर्ड इट स्पेसिफिकली इन द PSI Pre 2011. आई हैव टोल्ड यू कि गदर पार्टी कहीं ना कहीं रिपीट होगा, देख लेना. See here it has been repeated. Do let me know the year and do let me know the headquarter. दोनों मुझे बताओ. आपका आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. In which year were Bombay and Thane connected by rail? 1852, 53, 54, 55. Very close all options, but आपका सही जवाब है 1853. Which social and religious reformer from Maharashtra was popularly known as Lok Hitwadi? ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश आगरकर. आपका सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख. ही इज पॉपुलरली नोन एज लोक हितवाड़ी. इससे ये पता चलता है महाराष्ट्र हिस्ट्री क्वेश्चन ऑन सोशल रिफॉर्मर्स. ऑन विच सोशल रिफॉर्मर? गोपाल हरि देशमुख. बट सिर्फ ये जान के इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो 3 ऑप्शंस है ना, इन्हें भी आप ढंग से पढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहीं पे होगा, स्पेशली दिस पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट. हु लेड द चंपारण्य सत्याग्रह? महात्मा फुले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, वीडी सावरकर. आपका सही जवाब है महात्मा गांधी. इफ यू सी चंपारण्य सत्याग्रह इन डेप्थ, ये कौन से साल में हुआ था? 1917 में हुआ था. This is a unique fact. Who called Mahatma Gandhi to this place? यहाँ सत्याग्रह करना है. It was राजकुमार शुक्ला. Mentioned in spectrum clearly. Led by Mahatma Gandhi. Related to which crop? Champaran Satyagraha took place for one crop, right? It is the crop indigo. Please note this has been asked. And one system also has been mentioned. It is the तीन कतिया system. It means इतना portion of the land इंडिगो उगाना है फार्मर्स को. अ क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री. सी 1857 to 1947 बोला था मैंने पढ़ने, ये क्वेश्चन है 1917 से टैकल हो रहा है. इसका मतलब ये है कि इतना सफिशिएंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नवरोजी, लाला लाजपत राय, वीडी सावरकर, लोकमान्य तिलक. आपका सही जवाब है दादा भाई नवरोजी. ही इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो ही इज गिवन द ड्रेन थियोरी ऑफ वेल्थ. इस पर भी क्वेश्चन बना है. ही इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ये तो ऑलरेडी कवर किया था हमने. हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? हेनरी डेरोजियो, महर्षि दोंडो केशव कर्वे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय. आपका सही जवाब है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज. Here it is mentioned that it is formed by Raja Ram Mohan Roy,
द्वारकानाथ टैगोर एंड अदर्स. बट यूजुअली मैंने देखा है मोस्टली पेपर में ना राजा राम मोहन रॉय का ऑप्शन रहता है. एंड हु इज राजा राम मोहन रॉय? He was a religious and social reformer who is also known as the father of Bengal Renaissance. One more thing, राजा ये टाइटल किसने दिया था राजा राम मोहन रॉय को? It was given by Mughal Emperor of Delhi, अकबर II. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Who said, "You give me freedom, you give me blood, I will give you freedom"? All of us know the answer. Subhash Chandra Bose. Which work of Shakespeare was translated into Marathi by Gopal Ganesh Agarkar? I had told you. See, this person is very important. हमेशा पूछते हैं. Hamlet, The Merchant of Venice, Macbeth, Julius Caesar. Your right answer is Hamlet. So Gopal Ganesh Agarkar translated Hamlet into Marathi. And what is the name of the book? The name of the book was Vikar Vilasit. Please note, ये पूछा गया है. पहले ये पूछ लिया कि कौन सा ट्रांसलेट किया है, दूसरे में पूछ लिया वो ट्रांसलेटेड बुक का नाम क्या है, तीसरे में पूछेंगे कौन से लैंग्वेज में किया. सो इट इज मराठी. ही रोट डोंगरीच्या तुरुंगातील 101 दिवस. ऑलरेडी आस्क्ड, प्लीज नोट. एंड ही ऑल्सो रोट इन द न्यूज़पेपर सुधारक. PYQ again. This is from Maharashtra history. Topic social reformers. And which person? Agarkar. Please note, this option analysis is not essential over here. Next question. What was the mouthpiece of Satyashodak Samaj? Sudharak, Kesari, Deenbandhu, Prabhakar. आपका सही जवाब है दीनबंधु. And when was Satyashodak Samaj found? It was formed by Mahatma Phule on 24th September 1973. PYQ already पूछा है. माउथपीस दीनबंधु ये किसका था? कृष्णराव भालेकर का था. सुधारक किसका था? गोपाल गणेश आगरकर का था. इससे देखा जाए महाराष्ट्र हिस्ट्री क्वेश्चन फ्रॉम समाज. एंड प्लीज नोट, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड. ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है. इससे ये देखो कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं. अगर इवन इफ यू सी एंड इफ यू हैव दिस डाउट, नो 2011 का एनालिसिस ज़रूरी है क्या 2024 के पेपर के लिए? जस्ट टेल मी. वो जो बुटी बोरी का मैंने बोला था 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, आफ्टर लाइक 10 years, राइट? इसका मतलब ये है कि 10 साल बाद भी उसका रेलेवेंसी है. दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड विथ 2011 राइट फ्रॉम द स्क्रैच, so that it is easier for you to score marks. Who was the first to be appointed as Kshatriya Jagat Guru by Rajri Shahu Maharaj? I'm sorry if I pronounced it wrong. Gangadhar Kamble, Narayan Bhattji, Sadashiv Lakshman Patil और दत्तोबा साळवी. आपका सही जवाब है सदाशिव लक्ष्मण पाटिल. राजरी शाहू महाराज, very important. Again a question from Maharashtra history. Rajashri Shahu Maharaj. Who founded the Gram Prathmik Shikshan Mandal? Please note, repeated question. राजश्री शाहू महाराज फाउंड किए. महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महर्षि कर्वे. आपका सही जवाब है महर्षि कर्वे. फाउंडेड द ग्राम प्राथमिक शिक्षण मंडल. इन विच ईयर? He founded it in 1936. What was the reason? The reason was to educate the villagers. Gram means rural, no? So, to educate the villagers. He also started one university which is known as the SNDT University. I have covered it in a reel recently. आप प्लीज जाके देखिए, it will definitely help you. And he was a teacher of mathematics in which college? Ferguson College. Please note, इस पे क्वेश्चन बना है. फर्स्ट क्वेश्चन ये था that he was a teacher of mathematics in which college? तब था आंसर फर्गुसन. दूसरे पेपर में पूछ लिया फर्गुसन कॉलेज में हु वाज द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स? सो इट वाज महर्षि कर्वे. एंड ही गॉट भारत रत्न इन 1990. ये भी पूछा गया. दिस इज फ्रॉम महाराष्ट्र हिस्ट्री. ऑन विच सोशल रिफॉर्मर? कर्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बर्न मनुस्मृति? वेयर? नासिक, रत्नागिरी, महाड, मुंबई. सही जवाब है महाड. ये हुआ है, डेट पता होना इम्पॉर्टेंट है.
It took place on 25th December 1927 at Mahat. Next question, who gave donation to Maharshi Karve for Women's University? Tata, ठाकरसी, अंबानी, बिरला. आपका सही जवाब है ठाकरसी. SNDT College at Mumbai was established by Maharshi Dhondo Keshav Karve. In which year? In 1915. Earlier the name of SNDT College was Indian Women's University, Indian Women University. और ठाकर से है, इनका जो नाम है विठल दास ठाकर से. He donated in the year 1922. It is said 15 lakhs donation था उनका. In the memory of his mother नथीबाई ठाकर से. That is the reason कॉलेज का नाम चेंज किया गया to SNDT, श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से. I hope now you understood the relevancy of this name. This question is from Maharashtra history from the social reformer Maharshi Karve. Important person. When did G.G. Agarkar establish New English School? 1880, 1881, 1882 or 1883? आपका सही जवाब है 1880. प्लीज़ नोट रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले भी पूछा गया था. सो आगरकर, ट्यक एंड चिपलूनकर एस्टैब्लिश न्यू इंग्लिश स्कूल इन पुणे इन 1880. ये था स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में. महाराष्ट्र हिस्ट्री, सोशल रिफॉर्मर आगरकर. What social reforms were brought? Who started the newspapers Kesari and Maratha? Tilak and Agarkar, Chiplunker and Agarkar, Tilak and Chiplunker, none of the above. आपका सही जवाब है Tilak and Agarkar started newspaper Kesari and Maratha. Next question, which one of the following books is not written by Mahatma Phule? Please note, whenever you read a question, no, even in your exam, make this habit, inculcate this habit of marking, not पूछा है. और if they have asked you which one of the following is written by Mahatma Phule, always ऐसे मार्क कीजिएगा, because ये ना आपका ट्रैप होता है. Usually students is या not हमेशा miss, they get confused and they mark the wrong answer even after knowing the answer. So please don't do this. हाथ के मार्क्स कभी जाने नहीं देते. ऑप्शन्स आहे गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचे असूद, जातींचा उच्छेद, ब्राह्मणाचे कसब. कसब आपका सही जवाब है जातींचा उच्छेद. ये नहीं लिखा गया था महात्मा फुले जी ने. गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचे असूद, ब्राह्मणाचे कसब, ये सब लिखा था. प्लीज नोट in chronological order once this question has been asked, where they had given book names and they had asked कि इसको chronology order में लगाइए, पहले कौन सा बुक, दूसरा कौन सा बुक. मैंने ये ट्रिक से पढ़ा था. BGSSAS ये है ऑर्डर बुक्स का. B से आता है ब्राह्मणाचे कसब, G से गुलामगिरी, S से शेतकऱ्यांचे असूद, वापस S सत्सार, A से अस्पृश्यांची कैफियत एंड S से सार्वजनिक सत्यधर्म. एंड दिस इज पोस्ट्यूमसली. ओके, ये इनका बुक पोस्ट्यूमसली आया था. पोस्ट्यूमसली मतलब क्या? आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन इन 1891. जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक, BGSSAS. ओके, एंड यू हैव मेंशन द ईयर्स ऑल्सो. एक बार इसे पढ़ लीजिएगा. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम महाराष्ट्र हिस्ट्री फ्रॉम सोशल रिफॉर्मर महात्मा फुले. Again a very important person. With this we've completed history and science. Now we'll start with geography. About 3/4 portion of Maharashtra has dash soil: alluvial, regur, forest soil, lateritic. आपका सही जवाब है regur soil. In the comment section do let me know, regur soil is also known as, दूसरा नाम क्या है ये सॉइल का? ओके, ये आता है महाराष्ट्र ज्योग्राफी से फ्रॉम द टॉपिक सॉइल. वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस पे भी इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं फॉर सॉइल पे. विच लॉन्जिट्यूड डिटरमिन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? 82 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट,
28 degrees 30 minutes east, 82 degrees 30 minutes east, 28 degrees 30 minutes west. आपका सही जवाब है 82 degrees 30 minutes east. Here I have mentioned it. One more thing already been asked, इसलिए आप ज़रूर पढ़िएगा, that this longitude it passes through, कोई जगह से तो पास होता है ना, so it is मिर्ज़ापुर which is near Allahabad in उत्तर प्रदेश. This is from your India Geography. लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड तो आपको पता ही होना चाहिए, इवन कोस्ट लाइन कितना है, लैंड फ्रंटियर कितना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है. रिसेंटली मैंने एक रील डाला है, कंट्रीज विच हैव लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया. प्लीज गो वॉच दैट रील एंड आई हैव गिवन इट विद अ ट्रिक. यू कैन नेवर गो रॉन्ग आफ्टर वॉचिंग दैट. और इस पे क्वेश्चन हमेशा बनते भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम रिलेटेड टू? Flood control, flood management, increasing milk production and procurement, increasing food production. Flood देखने के बाद लोगों को बाड़ी लगा होगा, but here unfortunately the answer is not in the real context of flood. It is increasing milk production and procurement. One thing, again I'm addressing this. 2012 तो इतना जूना है, 2024 के प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं? 2023 का कंबाइंड प्री खोलो और देखो वहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन दिया है या नहीं है ना. क्वेश्चन आया है वाइट रेवोल्यूशन पे, कहाँ से आया है? सेम टॉपिक रिपीट आफ्टर so many years. Okay, one more important point which you must know, Operation Flood Program was started by whom? ये भी क्वेश्चन आता है. It is Vergis Kurin. When did it start? ये भी पूछा जा सकता है. इतना पूछ ले इतने डेप्थ में भी जा सकते हैं. That is 13th January 1970. Last, Operation Flood Program is also known as White Revolution, repeated in 2023. This is from economics. Okay. Next question. Where does the South Central Railway have its headquarters? Mumbai, Guwahati, सिकंदराबाद, गोरखपुर. आपका सही जवाब है सिकंदराबाद. साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ पे. इफ यू सी द इंडियन रेलवेज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? 16 जोन्स. एंड हाउ डिड आई रिमेंबर साउथ सेंट्रल? सी, साउथ सेंट्रल का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? SC ना, साउथ सेंट्रल. जस्ट एड E इन द बिटवीन, SEC, सिकंदराबाद. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ महाराष्ट्र is dash its east-west extent, less than, more than, same as, different from. Firstly, north-south extent है कितना? 720. Sorry, here I mentioned. Coastline कितना है? Again 720. East-west अगर हम देखे जाए 800 है. मतलब north-south, east-west कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, right? 800. ये 720. More than का साइन, आंसर है मोर देन. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टोटल एरिया कितना है महाराष्ट्र का? 307713 एंड डेंसिटी 365. महाराष्ट्र ज्योग्राफी क्वेश्चन टैकल बाय अ बुक एंड इट इज फ्रॉम फिजियोग्राफी. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. एंड यू नो one peculiar thing about this is, even after so many years these questions they get repeated. हमेशा पूछते हैं इस पे. In which of the following regions regular soil is observed on a large scale? Deccan Plateau region, Konkan Hills, narrow coastal strip of Konkan, Bamragarh Hills. Firstly आपका आंसर है Deccan Plateau region. Deccan Plateau region पे आपको regular soil मिलता है. And if you see, regular soil is also known as ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल. ये ब्लैक सॉइल कलर क्या, कौन सी चीज़ देती है ब्लैक ये सॉइल को? इट इज टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट. दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट. दिस वाज आस्क्ड इन मेंस. बमरागढ़ हिल्स कहाँ पे? ये देखो ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया. सो बमरागढ़ हिल्स आर लोकेटेड एट गढ़चिरौली, सॉरी नॉट हिल्स, द गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट. अगेन अ क्वेश्चन ऑन महाराष्ट्र ज्योग्राफी from the topic soil. Next question, what is the literacy percentage in Maharashtra as per 2011 census report? 47.80%,
74.30%, 82.91%, 79.81%. Your right answer is 82.91%. Highest literate state कौन सा? Everyone knows Kerala. Lowest literate state Bihar. Highest literate district in Maharashtra. You're preparing for an examination of Maharashtra. ये important है. It is Mumbai suburban. And lowest literate it is Nandurbar. Your friend Nandu, ऐसे याद रखिए. आपका जो फ्रेंड है ना नंदू ज़रा भी पढ़ा लिखा नहीं है. So if you see, this question is from Maharashtra Geography from the topic census. Very important. With this, history खत्म हो गया, science खत्म हो गया, and even geography खत्म हो गया. Now we'll start with polity. In which list are the foreign affairs mentioned? Union, state, concurrent, center and state. आपका सही जवाब है union. If we study this in depth, firstly ये जो list है union list, state list, concurrent list, ये कौन से schedule में आता है? It comes in the 7th. Please keep this in your mind. Union list में ये certain important topics है. Foreign affairs, atomic energy, banking, currency, census, interstate. ये सब कौन देखता है? यूनियन लिस्ट देखती है. स्टेट लिस्ट में कौन से टॉपिक्स है? पुलिस, प्रिजन्स, मार्केट्स. इंपॉर्टेंट. कॉन्करेंट लिस्ट से दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स, बैंक्रप्सी, कॉन्ट्रैक्ट्स. ये सब टॉपिक्स आते हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट में. इफ वी सी now if we see 2023 again pre खोलिए open polity section and tell me ये रिपीट हुआ है या नहीं. आपकी जो लिस्ट का है क्वेश्चन टॉपिक it was repeated even in 2023. See, MPSC is telling you by these questions कि अगले बार पेपर में आना तब लिस्ट पढ़ के ज़रूर आना. Here they will repeat it. It is not कि बाहर से कहीं से क्वेश्चन बनते हैं. It gives you hints like this. That list is important, please study and come. Soil is important, please study and come. अगर मार्क्स आपको नहीं आ रहे इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है. ऐसा नहीं कि इन्होंने हिंट नहीं दिया था. Okay? And if we see, union list has 98 subjects, state list has 59 subjects, concurrent list has 52 subjects. And if we see dominance, सबसे important union list, उसके बाद concurrent, and then you got state. This is from polity from the topic lists. Question: who elects the members of Legislative Council, Legislative Assembly and local self-governments? Graduate constituencies and teachers constituencies, both 1 and 2, directly by the people. आपका सही जवाब है both 1 and 2. If we see the Legislative Council, maximum strength होता है 1/3 of the Assembly and minimum 40. 1/3 इसमें से 1/3 are elected by the members of the local bodies. 1/12 by graduates of 3 years standing. ये है. Then you got 1/12 are elected by teachers of 3 years standing and 1/3 are by members of legislative assembly. इससे आपका ये दो right हो जाता है. This is from legislative council. Please study it in depth. With this, we've completed our PSI Pre 2012 question analysis. Here I've mentioned all the topics on which the questions were asked. Let us see. In science, we saw disease पे 2 question थे. AIDS, typhoid. Diet पे question था. Vitamin deficiency or disease, scurvy, beriberi पे था. Atom पे question था. Fungi पे question था. Refrigerators. Then we come to हिस्ट्री में 1857 पे क्वेश्चन था. आगरकर पे क्वेश्चन थे. शाहू महाराज पे क्वेश्चन थे. रैमसे मैकडोनल्ड जो अवार्ड था इस पे क्वेश्चन था. इंडियन लीग, मुस्लिम लीग, बरदौली सत्याग्रह, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सुभाष चंद्र बोस, कर्वे, अंबेडकर, महात्मा फुले, वासुदेव बळवंत फडके एंड रेलवे. ये सब पूछा गया था हिस्ट्री में. इफ यू सी ज्योग्राफी, यू गॉट फिजियोग्राफी, नॉर्थ साउथ का पूछा था. सॉइल पे क्वेश्चन, सेंसस स्मॉलेस्ट स्टेट क्वेश्चन थे.
Now if you see polity legislative council, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, डेट पूछा गया 1 मई 1962, बलवंत राय मेहता कमेटी, पार्लियामेंट सेशन कितना टाइम होना चाहिए वो बीच में, प्रेसिडेंट, 7 शेड्यूल के लिस्ट पूछे गए थे जो इवन कंबाइंड प्री में रिपीट किया, एंड इवन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. इफ यू सी इको में ऑपरेशन फ्लड पे, ये पेपर में इको पे कम वेटेज था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इको पे वेटेज नेक्स्ट पेपर में भी कम होगा. एंड दिस एडवाइस वर्क्स इवन टुडे. ओके, अगर एक पेपर में कोई टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज आ गया डजंट मीन अगले पेपर में वही वेटेज आएगा. एक पेपर में एक बुक से क्वेश्चन आया है, इसका मतलब 110% ये नहीं है कि अगले पेपर में भी वही बुक से 10 क्वेश्चन आएंगे. सो प्लीज़ डोंट divert yourself from the path. I hope you have liked today's lecture. I'll see you all in the next one. Jai Hind.